Companies Act has given a specific format as to how your revenue statement and how your balance sheet should look like. So when we come to the revenue statement part, I'm sure that my screen is visible to all of you. I'm just enlarging it so that you can see it better. Yeah, you can either give me a thumbs up or you can say yes in the chat box. I would be able to see that, friends. मुझसे कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट करते रहना बहुत जरूरी है, या सो दैट वी आर इन टच. So when we look at the revenue statement, the first part of it talks about something called as revenue from operations. All of you have to understand. See, this is a revision lecture, but still कुछ लोग भूल गए रहेंगे, इसलिए मैं वापस एक बार बेसिक्स याद दिलाने की कोशिश करता हूँ. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस किसको बोलते हैं या क्या होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस? सो इट इज नथिंग बट एवरी बिजनेस हैज कोर बिजनेस एक्टिविटी. व्हेन आई से कोर बिजनेस एक्टिविटी, यानी जो काम के लिए वो आकर बैठा है बिजनेस करने के लिए, जिस चीज का दुकान डालकर बैठा है, वो चीज से उसको जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. आप लोगों के लिए बहुत सिंपल है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. इसके अलावा बाकी कोई भी इनकम जो बिजनेस को मिलता है, दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ अदर इनकम्स. सो ये पार्ट हो गया इनकम्स के बारे में. हम लोग वर्टिकल बना रहे हैं, वो दोनों को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा टोटल इनकम. नाउ एक्सपेंसेस हैव बीन सब डिवाइडेड इनटू 7 हेडिंग्स. Right from a manufacturer, see, you have to understand business community is divided into two parts. One is a manufacturer and other is a trader. तो जब मैं मैन्युफैक्चरर की बात करता हूं, सो मैन्युफैक्चरर क्या करता है? वो रॉ मटेरियल परचेज करता है, उसको फैक्ट्री में लेकर जाकर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है और फिनिश गुड्स बेचता है. तो उसके लिए खर्चे में आएगा रॉ मटेरियल, फैक्ट्री के बहुत सारे खर्चे, है ना, ये सारा चीज आने वाला है. So दोस्तों, we have to understand the expenses in financial accounting includes cost of raw material consumed, purchase of stock in trade. Now when I say stock in trade, whatever goods he purchases from the market directly is classified as stock in trade. And then change in inventory of finished goods, work in progress and stock in trade. So रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की जब मैं बात करूंगा तो वो उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. याद रखना, कंज्यूम्ड वर्ड आ गया तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इट्स ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो जब मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम बोलता हूं तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की ही बात करता हूं. Purchase of stock in trade refers to purchase of general goods, finished goods, whatever the businessman purchases. तो बचा हुआ आइटम्स का जो स्टॉक है, इन्वेंट्री रेफर्स टू स्टॉक. तो हम लोग करते हैं बहुत सिंपल फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एंड उसको यहाँ पर लिख देते हैं. फिर वो फिनिश गुड्स हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो, स्टॉक इन ट्रेड हो. वर्क इन प्रोग्रेस किसको बोलोगे? वो चीज जो अभी तक रॉ मटेरियल स्टेज में भी नहीं है, फिनिश गुड्स में भी नहीं गया, जिसके ऊपर काम चल रहा है. Then comes something called as employee benefit expenses. All those expenses which have been incurred for the benefit of employees, whether it is salary, whether it is wages, whether it is canteen expenses, कुछ भी employees से related खर्चा दिखा, वो सब employee benefit में आ जाता है. When it comes to finance cost refers to all the expenses which have been incurred for raising finance for the company. When I say raising finance, मतलब क्या? हमने अगर लोन लिया तो हम उसके ऊपर वी पे इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ फिनांस कॉस्ट. और एनी लोन प्रोसेसिंग चार्जेस इज पेड, इट बिकम्स अ फिनांस कॉस्ट. Next comes depreciation and amortization. So we know that depreciation is nothing but use value of assets. As and when assets are utilized, हम लोग what we do is we depreciate it, क्योंकि हमने उतना उसका यूज कर लिया है. Amortization is for fictitious assets or losses that are written off. जिसको भी वर्ड रिटर्न ऑफ आता है, गुडविल रिटर्न ऑफ,
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, अंडरराइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ, उसको अकाउंटिंग भाषा में बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज amortization. एंड अदर एक्सपेंसेस, यानी दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल हेडिंग फॉर अ स्टूडेंट, क्योंकि अगर उसको कैटेगरी समझ में नहीं आया कि पहले 6 में से कौन से कैटेगरी में डालना है, तो द आंसर इज वेरी सिंपल, ही और शी मस्ट राइट द एक्सपेंस अंडर द अदर एक्सपेंस कैटेगरी. सो टोटल इनकम, दिस इज अवर टोटल इनकम माय डियर फ्रेंड्स. इसमें से जब मैं टोटल एक्सपेंसेस माइनस करूंगा, सो वट एवर इज लेफ्ट आउट इज माई नेट प्रॉफिट. सो एज पर द कंपनीज एक्ट, इट इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्सेशन. नाउ व्हाट सवाल उठता है, व्हाट इज extra ordinary items and taxation? See, before tax is a simple concept, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, इसके अंदर आता है प्रायर पीरियड आइटम्स, इसके अंदर आता है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट. जो रेगुलर बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस. नाउ एज फार एज योर एग्जाम्स आर कंसर्न, you have to remember only few example: loss on sale of assets, loss by fire, which can come under the category of extraordinary expenses. ज्यादातर क्वेश्चंस में तो होता भी नहीं है. डायरेक्टली वी अराइव एट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. So net profit before tax, as you all understand, is the amount of profit that we have earned before payment of tax. When it comes to tax, there are two kinds of taxes. One is called as a current year tax and other is called as deferred tax. Now, what is a deferred tax is an important concept in financial world. But as again, when it comes to your thing, when it comes to MBA first year or generally knowing financial statements, deferred tax is a postponed tax. A tax can be postponed due to various reasons. One, because of wrong estimation of income or expense, because of say any other reason जहां पर हमने एसेट को ओवर डिप्रिसिएट किया या ओवर चार्ज कर दिया या अंडर चार्ज किया. बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि व्हाई इज देयर अ डेफर्ड टैक्स. अगर हमको डेफर्ड टैक्स का पैसा मिलना रहता है, तो इट इज कॉल्ड एज ए डेफर्ड टैक्स एसेट विच यू विल बी लर्निंग इन बैलेंस शीट. और अगर हम लोग को गवर्नमेंट को पैसा देना है, तो इट इज कॉल्ड एज ए डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी. फॉर अ स्टूडेंट ऑफ MBA, you must just understand deferred tax is a postponed tax, a tax which was payable some years ago, but now it has come up due to any reason, either on the side of income tax or on our side, whatever is the reason. अगर वो आ गया तो उसको deferred tax बोलते हैं. तुम्हारे एग्जाम्स में वापिस अगर deferred tax होगा, तो it will be given to us in the question, you just have to write that amount. Before tax में से tax minus किया, so you get net profit after tax. इसके बाद एक एक्सरसाइज और चालू होता है. यहाँ पर हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट या रेवेन्यू स्टेटमेंट खत्म नहीं होता. वी हैव टू गो फर्दर एंड सी इफ वी आर हैविंग नंबर ऑफ शेयर्स गिवन इन द क्वेश्चन. आई एम सॉरी. If number of shares are given in the question, then we calculate something called as earnings per share. Earnings per share refers to the maximum amount that a person can earn by investment in shares. ये मिलता नहीं है, ये मिल सकता है. बहुत लोगों को EPS समझ में नहीं आता है. They say the actual shares, the actual amount received from the company, that is dividend per share. द एक्चुअल अमाउंट विच द शेयर होल्डर में रिसीव, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो पैसा आया है, कंपनी कभी बांटता नहीं है. आई विल टेल यू वन एग्जांपल. रिमेंबर दिस. इफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ अ कंपनी इज 15 लाख रुपीज, एक कंपनी ने 15 लाख रुपया कमाया, तो ऐसा नहीं है कि वो 15 लाख रुपया पूरा बांट देता है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज appropriations which the company does. In the appropriations comes transfer to reserves. There are some statutory reserves. There are some reserves which the company creates on its own, because in a company, shareholders are the owners. They are scattered throughout the country. पूरा पैसा बांट दिया तो वापस ले नहीं सकते अपन. इसलिए डायरेक्टर्स कुछ पैसा अपने पास रखते हैं. कुछ अमाउंट इसमें से जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, शेयर होल्डर्स को, दैट इज कॉल्ड एज proposed dividend. So let us say that 2 lakhs is been
given to the shareholders. यानी out of 15 lakhs, only 2 lakhs is proposed to be distributed as dividend to the shareholders. So actually the amount of dividend given to the shareholders is 2 lakhs, and even 10 lakhs which is remaining, it is retained, kept with the company and transferred to next year. So earnings per share and dividend per share are two different concepts. I want all of you to understand it right away that earnings per share is not dividend per share. Am I clear with this word of earnings per share and dividend per share? If you have understood it, you can give me a thumbs up or say yes in the chat box. Great. So don't get confused. Now, when we talk about earnings per share, further there are two very important aspects. One is called as basic EPS. Basic EPS is defined as nothing but net profit after tax minus preference dividend divided by number of equity shares. So that's very simple कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड निकाल दो और जो बच गया वो इक्विटी शेयर से डिवाइड करो, यू गेट समथिंग कॉल्ड एज बेसिक ईपीएस. Diluted EPS is a concept which goes beyond basic EPS. Here, if you are having something called as convertible debentures, please pay attention carefully. सर सॉरी, आप बेसिक अर्निंग्स पर शेयर एक बार दोबारा रिपीट कर सकते हो? Yeah. So basic earning per share, if you can see my screen, it is defined as net profit after tax minus preference dividend. If there are preference shares, there would be preference dividend, and whole divided by number of actual equity shares in the company. So in my example, net profit after tax is 15 lakhs. There is no preference dividend in the company. And if the company has issued 1 lakh equity shares, so my basic EPS would be 15 lakhs divided by 1 lakh, that is rupees 15 per share. Kanishka, am I clear on that? Yes, sir. Great. Now, imagine that the company has something called as convertible debentures. Now, what is a convertible debenture? Convertible debenture means those debentures which can be converted into equity shares on the date of redemption. So by chance if it is given, or there is a convertible preference share that is given. So naturally, due to this convertible proportion, the number of equity shares in the company may increase. Let us say that we have given option and the total number of what we call as share debentures or preference shares which are convertible are worth rupees 5 lakhs or 5 lakhs equity shares. So in that scenario, मेरा एक्चुअल इक्विटी शेयर्स 1 लाख है, लेकिन मैं और 5 लाख बढ़ा सकता हूं, तो उस सिचुएशन में मेरे इक्विटी शेयर्स 6 लाख के हो जाएंगे. So now 15 lakhs, instead of dividing by 1 lakh, I will divide by 6 lakhs, and whatever is the answer, that will become my diluted. Diluted, you understand? कम हो जाएगा. आपको वापस ये थियोरेटिकल नॉलेज इसका इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली आपको इसका जरूरत नहीं पड़ने वाला है. So this is your revenue statement. So revenue statement, what you have to remember, the crux of revenue statement is expenses. You have to remember that expenses ka order, the better you remember, the easier it is. It starts with income and we have to deduct expenses. There are 7 headings of expenses. First is raw material consumed. Second is purchase of stock in trade. Third is change in inventory of finished goods, work in progress, stock in trade. Then fourth is employee benefit expenses. Fifth is finance cost. Sixth, depreciation and amortization. And last one is other expenses. Once you deduct all these expenses, you get net profit before extraordinary items and tax. You deduct extraordinary items, you have to remember loss by fire, loss by theft, loss on sale of assets. You will get net profit before tax. From that, you deduct current year provision for tax and deferred tax. Deferred tax is tax which is related to some of the previous years.
तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पर आपका आंसर खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप अलग से कैलकुलेट करते हो अर्निंग्स पर शेयर, और उसमें दो प्रकार होते हैं, बेसिक एंड डाइल्यूटेड। If anybody wants to ask anything in this, you can please type in the chat box or unmute yourself and ask now. सर एक बार डायलूटेड का बता दीजिए थोड़ा सा, डायलूटेड कैसे? डाइल्यूटेड वापस मैं आपको बता रहा हूं, आप लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है।